वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे QNET 10 के बारे में। वैसे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो उससे पहले लेट्स सी कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट एंड कितने बीवी का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, सो जैसे कि आप ये वेबसाइट देख सकते हैं QNETindia.in। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, ये ओपन होता है, उसके बाद आप क्लिक कीजिए प्रोडक्ट पे एंड होम एंड लिविंग पे जाइए। होम एंड लिविंग जाने के बाद से आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे QNET 10। ठीक है, इस पे व्यू पे आप क्लिक कीजिए। व्यू पे क्लिक करने के बाद से आपको दिखेगा इसकी कॉस्ट। अब ये कॉस्ट जो है 42,230 रुपीज है। ये जो कॉस्ट है ये एज ए कस्टमर, जो कस्टमर है उनको ये कॉस्ट पड़ेगी। जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आप आईआर नहीं हो, तो ये आपको कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं कि यदि आप आईआर बन जाते हैं तो आईआर को ये प्रोडक्ट कितने में पड़ेगी। तो मैंने लॉगिन कर लिया इसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर, और वहां पे बीइंग एन आईआर तो मुझे ये जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ जाएगी 39,570 रुपीज। ये टोटल दोनों मिला करके, एक शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस 2000 रुपीज जो है वो, और प्लस प्रोडक्ट का कॉस्ट, तो ये दोनों मिला करके ये 39,570 रुपीज पड़ता है। ये जो कॉस्ट है ये आईआर के लिए है। ठीक है, और ये मैंने जो कॉस्ट बताई है वो एज ए कस्टमर, जो कस्टमर है उनके लिए है। कस्टमर यदि आईआर बन जाता है तो अगेन यदि उनको बाय करना होगा कैंट का आरओ, तो उनका जो कॉस्ट है सेकेंड टाइम जब बाय करेंगे तो 39,570 रुपीज पड़ेगा। हाँ, तो आपसे एक और बात बोलनी थी कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये दोनों में प्राइस डिफरेंस क्या है। तो इसको इस तरह से समझते हैं, सपोज आपने एक शॉप ओपन किया हुआ है, आपने उस शॉप में कुछ सामान भरे हुए हैं, ठीक है, और आपने वो प्रोडक्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी है वो अपने बाहर से लेके आके अपने शॉप में रखा हुआ है। यदि कोई कस्टमर आता है तो क्या आप उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख करके ही बेचोगे, राइट? सो ऐसे तो नहीं बेच दोगे कि जो आपको जो मिला हुआ जिस कॉस्ट में आपने बाय करके लेके आए हो और उसी कॉस्ट में आप बेच दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। सेम थिंग अप्लीकेबल फॉर द आईआर। सो आईआर को सस्ते में पड़ता है, और यदि आप कस्टमर है तो आपको वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, यदि आप आईआर बन जाते हो और यदि वो वापस से प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको सेम कॉस्ट में पड़ेगा। अभी आपको यदि QNET का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप 500 बीवी से भी चालू कर सकते हैं। 500 बीवी का प्रोडक्ट, ये एक जो अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर है, ये भी इसको भी ले सकते हैं, या फिर जो शार्प का एयर प्यूरिफायर है वो भी ले सकते हैं। माय होम का जो है नैनो वाटर प्यूरिफायर वो भी ले सकते हैं, या फिर आरओ वाटर प्यूरिफायर ये भी ले सकते हैं। ये चारों में से कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आप चालू कर सकते हो। मिनिमम 500 से बिजनेस चालू कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे अपलाइन आपको बोलेंगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए, भाई ऐसे अपलाइन जो है वो फ्रॉड अपलाइन है, उनसे दूर रहो। अदरवाइज ये इनके चक्कर में आप पड़ोगे तो आपका फाइनेंशियल लॉसेस होगा, आपका टाइम वेस्ट होएगा। सो बी केयरफुल, आप किसके साथ में काम करते हो वो एक प्रॉपर लोगों को चूज करो और उनके साथ ही काम करो। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं ना, यदि आप 1500 बीवीसी बिजनेस यदि चालू करते हो ना, दैट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट द बिजनेस। अभी इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है क्यों चालू करना चाहिए 1500 बीवी से। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों 1500 से बीवी से बिजनेस चालू करना चाहिए। तो ये रहा प्रोडक्ट के बारे में और इसके कॉस्ट के बारे में। ठीक है, अभी आपने जैसे कि थंबनेल देखा है, तो वो क्वेश्चंस जब भी मिस्टर सुनील दुग्गल जो कैंट के जो हेड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, उनको ये क्वेश्चन जो भी पूछा गया तो उनका क्या जवाब है वो अभी मैं आपको सुनाऊंगा। वो इंग्लिश में होगा लेकिन आप समझ सकते हो। उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि आपको QNET का जो कैंट है और जो मार्केट में है कैंट, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या आपको ये QNET कैंट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिसीजन, राइट? तो चलिए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। And this gentleman
who is with this company for quite some time. But overall, he has 3 decades of experience, 3 decades of experience with various industries. He is right now heading our wonderful product, Kent RO Systems. He is the head of international business. He talks very simple. His language is very simple, but he is going to give you a depth of experience, depth of this product, how this product you can communicate or you can sell to the masses. So without taking much of time, let me bring upon Mr. Sunil Duggal on this platform. Mr. Sunil, welcome. And a lot of people who have logged in today, they are also very brand new people, and they are in fact now choosing this career of doing business with us, and they are selecting this product. So what will be, like, based on your experience, what will be 3 important selling points? Okay. 3. So I know many, but let's say 3 important things. Okay, so I will answer this question 3 and 3 kinds. Let's see. So let's see. I'll try my best. Just try and make it easy for them. First 3 is the Kent QNET gives the purest water, healthiest water, and tastiest water. I keep on saying this, and it's a fact. Purest, healthiest, and tastiest. For purest, we have third-party certification, so there's nothing to worry. Taste, of course, is subjective, but we know, that's why we say within the green zone, if you keep the TDS, water is going to be tasty. And healthy, we know, again, because this technology is tested and we have third-party test certifications. Okay. I'm going to the next. Kent, QNET, and Kent products, some of the Kent products, but Kent QNET specifically, is the only product which was created, and now others have followed because people follow the trend, which does multiple purification by reverse osmosis plus UF plus UV. So there is purification all the way, RO, UV, UF, to make sure that the water which comes out is the purest. On top of it, there is a digital display of purity. So it gives you real-time knowledge about the quality of water and what's happening to the machine. There's also a beautiful feature on the machine, that it gives not only the visual alarm by that screen which we were seeing, the digital display, which is green, red partially. Also, when it's time to change filters, the machine will give alarm. It's not that you one fine day you get up in the morning, you come back from work, there is no water or the quality of water is poor. Machine is so intelligent that it starts giving out alerts at least a month in advance. So initially the alert would be like beep, beep. Not as annoying as we had in the earlier session when we were trying to talk, but so it'll be like sort of beep, 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 beep like this every other few minutes. Every day it'll keep increasing. And then one day when machine realizes, it senses that now the quality of filters really needs to change. Machine intelligence says, listen, buddy, you are not taking care of your health. Now I take over. It stops dispensing water and consumer hears beep. So he's forced to call for filter change, because water is life. You should not mess around and play with your life. So these are some of the factors which others don't have. And on top of it, the NSF and WQO certifications, the TUV, the CE, the European standards, which we comply to, our products comply to. So like I said, no other company has it. And on top of it, to me, and I say it all the time to my colleagues and my team and my other customers, this is the most beautiful looking machine, no doubt about it. No doubt about it.